Hello everyone, welcome back in today's class. Students, exercise 10.5 of NCERT book. We have done 2 questions of this exercise. Today we are supposed to start with question number 3. This is a figure given. This P and R is the chord of the circle. O is the center of the circle and this Q point is on the peripheral of the circle. This angle is given of 100 degree. So what they are asking, PQR is equal to 100 degree. PQR are the points on the circle with center O. Find OPR. OPR. This means what I have to find out in this question, to find angle OP and R. Okay. In the previous classes, those who have attended the session, I told you some of the theorems, okay, that are important for this exercise. I told you one thing, the angle made by the chord in the same segment of a circle, okay, the angle made, this chord, this PR is the chord, if one chord is making an angle at the center, ओके यही कोड आपके पास सेंटर पे एंगल बना रही है और यही कोड आपके पास यहाँ पे सर्कल पे एंगल बना रही है, सर्कल की बाउंड्री पे. द एंगल मेड एट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज ट्वाइस द एंगल मेड एट द सेंटर. क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है ये जो एंगल होगा वो उसका हाफ होता है, फाइन. बट हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, दे बोथ शुड बी इन सेम सेगमेंट. बट हमारा जो कोड मेकिंग एन एंगल इन अनदर सेगमेंट एंड कोड मेकिंग एन एंगल विद द सर्कल इज अनदर सेगमेंट. तो हम इनको सेम सेगमेंट में करने के लिए फिगर को थोड़ा सा अपने तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं. हम उसको सेम सेगमेंट में लेके आते हैं. लेट मी ट्राई टू ब्रिंग इन द सेम सेगमेंट एंड दिस एंगल इज गिवन ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, फाइन. And I told you angle made here is half of the angle made at the center. If this angle is of 100 degree, my dear student, then this angle will be of 200 degree, double of that. And OP and OR are the radii of the circle. These two are the radii of the circle and radii of the circle are equal. Okay. Then if I talk about OP and R, this will become an isosceles triangle. And we know that isosceles triangle is a triangle having two sides same and two opposite angles are also equal. So my this angle will be x. So this angle will be of x degree. How? Here we will start solution. Solution. Angle PQR equals to 100. Then I will write, then angle POR will be of 200 degree. Here we will mention the reason, because angle subtended by the arc, angle subtended by the chord, at the center is double of the angle subtended by it at the boundary. And let me mention here, in the same segment. इस same segment का it's a very important role in this question, in the same segment. Okay, that's why I have written POR is equal to 200 degree. Then in triangle POR, OP is equal to OR. Here we will mention radii of the circle. So triangle POR is an isosceles triangle, and angle P plus angle O plus angle R, the sum of all angle will be of 180 degree. You will mention the reason, angle sum property. Any kind of triangle, the sum of all angles will be 180 degree. What is the measure of angle P? अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी तो वी हैव मेंशन आइसोसेलेस के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. अगर मेरे को ये x लेना, देन दिस ऑल्सो विल बी ऑफ x. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल O? 200. We have find it out. Angle R, again x.
only x we can write, otherwise. Then 2x is equal to 2x will be equal to sorry. This angle is of 100, then this angle will be of 100, this angle will be of 200. Fine. What we have to find out in this question? I have to find out this angle will not be of 100 degree. कोड ने जो इसके साथ एंगल बनाया, दिस एंगल विल बी ऑफ 200. ये वाला एंगल आपके पास 200 का होगा. एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर ये 200 होगा और ये कंप्लीट आपके पास 360 का होता है, तो ये एंगल आपके पास 160 का होगा. सॉरी, इट विल नॉट बी ऑफ 160. ये वाला जो एंगल आपके पास होगा वो एंगल आपके पास रहेगा 160 का. तो ये आपके पास यहाँ पे 160 जाएगा. 2x इज इक्वल टू 160. आप 180 में से माइनस करेंगे, दैट विल बी ऑफ 20. एंड व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल x? एंगल x विल बी ऑफ 10 डिग्री. दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन. ये ध्यान रखना, ये एंगल अगर आपके पास 100 का जाता है तो ये बाहर वाला एंगल आपके पास डबल जाएगा 200 का. तो और ये कंप्लीट आपके पास सर्कुलर होता है 360 का. 200 माइनस करेंगे, देन दिस विल बी ऑफ 160 डिग्री. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज. दिस इज द फिगर गिवन. और ये कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज गिवन ऑफ 69 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन ऑफ 31 डिग्री. This is B point, this is C, this is A and this is my D point. Okay, they are asking find BDC. BDC. This is what I have to find out in this question. Let me mention here question number 4. I have to mention angle to find angle BDC. This is what I have to find out. Solution, let me start with given. Also you may mention in these questions solution. Let me take angle triangle ABC. Triangle ABC, I will use angle sum property. Angle A plus angle B plus angle C will be of 180 degree because of reason angle sum property. What is the measure of angle A? That I do not know, not given to us. Angle B 69 degree. Angle C, it is given. See, it is very clearly given. This complete angle B is given of 69. If I talk about angle triangle ABC, then angle C is of 31 degree equals to 180. Angle A plus this will become 100 equals to 180 degree. Angle A is equal to 80 degree. तो हमारा एंगल A जो है वो कितने डिग्री का आ चुका है? 80. लेट मी रिकॉल वन मोर इम्पोर्टेंट थ्योरम जो हमने इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले डिस्कस की थी. द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, ये बी सी हमारे पास एक कोड है. सेम सेगमेंट में जो वो एंगल बनाती है दोनों, वो दोनों सेम होते हैं एट द विद द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. ये कोड ने बाउंड्री के साथ यहाँ पे 80 डिग्री का बनाया. इसी कोड ने बाउंड्री के ऊपर जो दूसरा एंगल बनाएगी वो भी कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का. देन आई मे मेंशन हियर, देन एंगल BDC will be of 80 degree. You can mention the theorem here. Angle subtended by the chord at the boundary of the circle in the same segment will be equal, or all are always equal, will be equal. That's why angle BDC will be of 80 degree. I hope I am able to clear the question to you. Let me move to next question of this exercise, that is question number 5. Question number 5, the figure is here. This is the figure. Something is given to us. This angle is of 20 degree. Okay, this angle is of 130 degree. This is B, this is C, A, D and this point is E. I will write here, I will mention here what I have to find out in this question. To find angle BAC. This angle I have to find BAC. To find angle BAC. This angle I have to find out. Okay, let me reach there. If student this angle is of 130 degree, what will be the measure of this angle? This angle will be of 50 degree because this is a straight line and the straight angle is of 180 degree.
This angle is of 30 degree, this angle will be of 50 degree. Let me talk about EDC. If this is 50, this is 20, 70 और इस पूरी ट्रायंगल की एंगल का सम 180 होता है, इन दोनों का 70 चला गया, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल? 110. Okay, now I will talk about, I have to find out this angle. Okay, actually I have find it out. The angle will be of 110 degree. Angle will be 110 degree because this is what this is I have find it out. And the angle subtended by chord BC, what is our BC? BC is the chord. Angle subtended by the chord in the same segment, this is BC, it is subtended two angle, this angle and these two angles will be of same, isn't it? Because we have told it earlier, यही एंगल हमें फाइंड करना था. दिस वॉज आवर प्रायोरिटी. अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, here we can mention that we are finding the solution of the question. In triangle EDC, angle E plus angle D plus angle C is equal to 180 degree. We can mention here angle sum property. Okay, angle C आपको given है 20 degree plus एंगल E अभी अभी आपने निकाला है 50 डिग्री. आप चाहें तो इसका रीज़न मेंशन कर सकते हैं. एंगल E इज इक्वल टू 50 डिग्री, स्ट्रेट लाइन, और यू मे राइट हियर लीनियर पेयर 50 प्लस एंगल D plus 20 degree is equal to 180. 70, 50 plus 20, 70. Angle D is equal to 180. Then the angle D will be of 110. Then you will write, then angle A also will be of 110. Reason you will mention here, angle made by the chord in the same segment at the boundary of the circle are always equal. That already we have mentioned here, mentioned in the previous question. This is what we have mentioned. So my dear student, I hope I was able to clear these three questions for you. If really I help you in solving these three questions, then please do like, share this video and subscribe my channel for my motivation, so that in future I may bring more knowledgeable videos for you based on this content and the concept of NCERT. So I just want you to be in tune with me in future regarding the solution of these questions and all. I will help you out. We will meet in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself.